Hello and welcome to Unacademy, and this is our channel Unacademy Cat. Very good evening to all the learners of Unacademy and welcome you all to a brand new session from our Indian history series guys. आज हम लोग modern history शुरू करने वाले हैं and we are going to discuss two major topics today. One is the advent of European and another one is the revolt of 1857. Hi Rajinder, good evening to you and welcome to this session. तो चलिए गाइज इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So all the people who are going to be here for the very first time, I am Advocate Rushikesh Kate and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exam that goes for ZAT, IFT, CMAT and particularly TISS guys. So this is the channel where I will be coming live daily twice a day. One is 11 a.m. जहां पर हम लोग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का क्लास करेंगे एंड वन इज 7 पीएम वेयर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द स्टैटिक जी के पार्ट गए. तो कि सारा जो स्टैटिक जी के पार्ट है हमारा वो हम लोग कवर करेंगे 7 बजे के सेशन में. इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड जो अलग अलग टेस्ट सीरीज करते हैं हम लोग वो सारा का सारा हम लोग इसी सेशन में कवर करेंगे. हाय सायंतिका, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो एंड Pankhuri, good evening to you and welcome to this session guys. Okay, so guys there are two types of subscriptions available with you. One is the plus subscription जिसमें आपको daily live classes, weekly tests, study material, unlimited access and structured courses मिलते हैं. Whereas in Iconic आपको सारे plus के benefits मिल जाते हैं but at the same time you also get personal guidance, study planner, one-on-one live mentoring, personalized test analysis and expert guidance for all the examinations that you're preparing for. So go for the subscription guys. Offer चल रहा है Unacademy पर. If you buy 3 months of plus subscriptions you can get 1 month absolutely free. If you buy 12 months of plus subscription you can get 3 months of subscription absolutely free, and if you buy 24 months of subscription you can get 3 months of subscription absolutely free guys. And this offer has been extended till 13th of October. तो कल आपका आखिरी दिन है इन सब्सक्रिप्शन को लेने का, तो जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन लो. आइकॉनिक के लिए भी द 1 year सब्सक्रिप्शन प्लान गोज फॉर 39,500 रुपीज एंड ऑल द पीपल प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2022 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए है दैट गोज फॉर 59,999. एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट ये मेरा एडुकेटर कोड है RUSHI रुशि. This will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. So do not forget to use this code whenever you go for the subscription guys. Also नए बैचेस शुरू हो रहे हैं guys. 13th of October से मेरा भी नया बैच शुरू हो रहा है for CAT 2022. The batch has already started. Our classes will start from this Saturday. So जल्दी से जल्दी plus और iconic subscription लो. Enroll to these classes and enhance your learning only with Unacademy. Hi Sukanshika, good evening. Hello Aditya, good evening. Welcome to this session. Okay, so guys आज हम लोग एडवेंट ऑफ द यूरोपियन और रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर करने वाले हैं. एक चीज याद रखना गाइस, अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग दैट मॉडर्न हिस्ट्री सारे एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हम देखते आ रहे हैं स्पेशली टीआईएसएस. ओके, टीआईएसएस की तरफ अगर हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू सी दे आर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री ओनली. और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस तक आता है. उसमें से भी यूरोपियन एस्टेब्लिश्ड एक्चुअली यूरोपियन एस्टेब्लिश तो एक नहीं था. देयर वाज नॉट वन यूरोपियन एस्टेब्लिशमेंट, देयर वर वेरियस यूरोपियन एस्टेब्लिश्ड केम इन, बट एक अलग अलग टाइम फ्रेम के बाद, ओके, एक इंटरवल के बाद हर एक एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को डोमिनेट करने का ट्राई किया था इंडियन हिस्ट्री में. हावेवर उसमें से एक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका जो रीन है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज इवेंचुअली those were the people who have established their administrative rule in India for a very longer time. मतलब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1773 से लेकर जो उन्होंने फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में शुरू किया था दैट लास्टेड टिल 1947. तो यही एक जो पार्ट है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं है कि
पोर्चुगीज हो या फिर डच हो या फिर डैनिश हो या फिर फ्रेंच हो, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. राजेंद्र, ओनली फ्रेंच गवर्नमेंट कंपनी, ऑल इज प्राइवेट वन, यस. बट ये सारे गाइज, ओके, चाहे पोर्चुगीज हो, व्हेन वास्को द गामा गेम इनटू इंडिया, कैलिकट में वो सबसे पहली बार जब आए थे 15 जून 1498 को, he was received by the Hindu ruler who was known by the name of Zamorin. Okay, Zamorin ने उन्हें रिसीव किया था. और फिर पोर्चुगीज का एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया. दे एक्वायर्ड बजाइन, दे एक्वायर्ड गोवा, फिर दे एक्वायर्ड ड्यू फ्रॉम द बहादुर शाह ऑफ गुजरात. बट हावेवर, एक चीज को समझना गई, किसी भी एक एरिया को, नाउ हिस्ट्री, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज हिस्ट्री इंपॉर्टेंट? क्योंकि ऑलरेडी दोज आर एन इवेंट ऑफ, वो पास्ट में हो गया है. बट ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, व्हाट ऑल द थिंग्स दैट हैड हैपेंड एंड व्हिच स्टिल हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है. सो पोर्चुगीज हो या फिर डच हो या फिर फ्रेंच पीपल हो, ओके, all these people, they had gone to some kind of conflict, okay, कुछ conflict उनके बीच में हुआ था. in the Indian rulers also, okay, Indian rulers के साथ में भी हुआ था, उनके खुद के साथ had their conflicts with own European countries also, and eventually the Englishman came out victorious. जैसे पोर्चुगीज अगर हम लोग देखेंगे 16th सेंचुरी के एंड में, उनका जो डोमिनेंस था, उनका जो रूल था, वो धीरे 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 कम हो गया. डच पीपल ऑल्सो, बैटल ऑफ बेडेरा, इंग्लिशमैन के साथ जो बैटल ऑफ बेडेरा हुआ था, उसमें भी द डच हैड टू फोर्सफुली सेल ऑफ ऑल देयर सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिशर्स. फ्रेंच और इंग्लिशमैन, एंग्लो फ्रेंच वॉर भी हुए थे, 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए थे एट वेरियस टाइम. ट्रीटी ऑफ ऑक्स ला चैपल है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस है. ट्रीटी ऑफ पेरिस में इवेंचुअली ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर और पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द एंग्लोज एंड द फ्रेंच पीपल, दैट इवेंचुअली केम टू एन एंड. ओके, बट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि इंग्लिश सुप्रीमेसी कैसे आया. हाउ डिड द इंग्लिश सुप्रीमेसी केम आउट? 1498 में यूरोपियंस फर्स्ट केम टू इंडिया. एक और चीज को समझना इंपॉर्टेंट है गाइस, कि इवेंचुअली व्हेन दे केम टू इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया में आते से ही सब लोगों का रूल शुरू हो गया, कि द पोर्चुगीज केम एंड देन दे अटैक्ड इंडियन रूलर एंड दे कैप्चर्ड गोवा, दे कैप्चर्ड वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया. डच भी आए, उन्होंने भी हमला कर दिया, इंग्लिशमैन भी आए, उन्होंने भी हमला कर दिया, फ्रेंच भी आए, उन्होंने भी हमला कर दिया. इट्स नॉट, एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट. दे हैव कम एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स, अलग अलग टाइम्स में वो इंडिया में आए थे, एंड देयर रोल हैज इवेंचुअली इवॉल्व्ड. ओके, उनका जो रोल है वो धीरे 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 वो चेंज होता गया है. सर जहांगीर और फारूक शियार के रीन में ज्यादा पॉपुलर हुए थे ब्रिटिशर्स. सर कैट के सिलेबस में हिस्ट्री भी होता है? नो विनय, कैट के सिलेबस में हिस्ट्री नहीं होता है. एक्चुअली कैट के सिलेबस में जीके होता ही नहीं है. तो यू कैन, दिस इज अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर यू. जीके सिर्फ सीमैट, आईआईएफटी, जैट और टीआईएसएस में होता है. तो इफ यू आर preparing for these examinations, this session is for you. Okay, Vasco da Gama, yes. तो we have to understand their role. Okay, उनके रोल को समझना हमें important है. तो सबसे पहले when the Portuguese came, the Dutch came, the French came, they came as merchants. Okay, वो सबसे पहले merchants के तौर पर वो लोग आए थे, just to trade. Now we all know कि India is it's one of the countries in the world which has maximum number of spices. आज भी अगर हम लोग देखते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, इंडिया सबसे ज्यादा स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है. सो दे केम इन द सर्च ऑफ स्पाइसेस. लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू इंडिगो, फिर ओपियम का कल्टीवेशन भी यहाँ पर शुरू हो गया. बट उनका रोल को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एकदम से वो आए और उन्होंने रूल को एस्टेब्लिश नहीं किया. दे टुक परमिशंस फ्रॉम द इंडियन किंग्स टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज. मसूलीपट्टनम है, सूरत है, बंगाल है, कासिम बाजार है, ऐसे अलग अलग जगहों पर उन्होंने फैक्ट्रीज को सेटअप की थी. तो मर्चेंट से दे दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू मैन्युफैक्चरर्स. ओके, अपने फैक्ट्रीज को उन्होंने सेटअप किया,
फिर मैन्युफैक्चरर्स बन गए. सो व्हेन फैक्ट्रीज केम, फैक्ट्रीज के साथ में सेटलमेंट्स भी आ गए. जब सेटलमेंट्स आया तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी आ गया. सो व्हेन कोड ऑफ कंडक्ट केम, यू नीड टू हैव एन अथॉरिटी. आपको एक अथॉरिटी को होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. सो इवेंचुअली with conflicts with Indians and ultimately they became administrators. Okay, वो administrators भी बने. तो इस चीज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है गाइस. देयर रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1-2 साल या 10-20-30 साल में भी नहीं. इट हैज टेकन सेंचुरीज for their role to evolve. Their existence in Indian territory has taken centuries. फैक्ट्रीज कम वेयर हाउसेस बड़े वाले मैंने एक नॉवेल में पढ़ा था. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, तो यही आप देखो, टाइमलाइन देखो. हाउ इज द टाइमलाइन? हाउ डिड द इंग्लिशमैन एक्चुअली राइज? इफ वी सी द टाइमलाइन, 1498 में द यूरोपियंस केम इनटू इंडिया फर्स्ट, एंड द फर्स्ट फॉर्मल इवेंट which first formal attempt for establishing administration was in India was taken in 1773. Okay, 1498 से लेकर 1773. So almost 300 years have passed into this. Okay, 300 साल इसमें चले गए हैं for them to shift from merchants to administrator. तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये एक समझ, गलत समझ होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीडिंग, कि वो अल्टीमेटली वो आए, उन्होंने इंडियन रूलर्स पर हमला कर दिया और दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस. इट्स नॉट लाइक दैट. अब जैसे मैंने कहा, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज वन विद द इंग्लिशमैन, क्योंकि अल्टीमेटली दोज वर द पीपल हु हैड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन इंडिया. अब ये कैसे हुआ? हाउ डिड इट हैपन? ओके, हाउ डिड इट हैपन? द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल. ओके, पहला इंग्लिश फैक्ट्री तो वैसे सूरत में आया हुआ था. इट वाज डन बाय द फरमान फ्रॉम जहांगीर. ओके, जहांगीर से एक फरमान लिया गया था और सूरत में सबसे पहला इंग्लिश फैक्ट्री वो सेटअप. बट बंगाल में जो सबसे पहला फैक्ट्री था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन हुगली. ओके, हुगली में एस्टैब्लिश हुआ था in 1651 under the permission of Sultan Suja, who was the second son of Shahjahan and Subedar of Bengal. अगर क्वेश्चन आता है कि किस किस के इवेंट के बाद ब्रिटिश की सुप्रीमेसी आए, तो उसका आंसर क्या होगा? एक ही उसका आंसर है. यू हैव टू चेक इट आउट इन द ऑप्शन. एक बैटल ऑफ प्लासी है क्या, दूसरा बैटल ऑफ बक्सर है क्या. दिस वाज द ओनली इवेंट जिसके बाद सारे जो दीवानी और निजामी राइट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे. ओके, नाउ प्लीज्ड विद द सर्विसेज ऑफ मिस्टर बॉक्सन इन currying the royal lady, Sultan Suja granted company the privilege of free trade in Bengal, Orissa and Bihar. तो बंगाल का जो province था guys, it was spreaded across some provinces of Bihar, some provinces of Orissa also. तो एक ही बड़ा स्टेट था बंगाल का. तो एक बार आपको परमिशन मिल गया है कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो. You can do it in Bihar also, you can do it in Orissa also. And soon, the factories of Englishmen sprang in Kasim Bazar and Patna. Now this is an important event guys. Okay, ये एक काफी important event है कासिम बाजार का. Okay, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे पास है. Who was the last independent नवाब of Bengal? बंगाल के लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब कौन थे? सायंतिका, पंखुरी, राजेंद्र, anybody? Who was the last independent ruler of Bengal? Sujauddaulah नहीं. Sujauddaulah no. Sirajuddaulah. Okay, Sirajuddaulah. Now when the Britishers or the Englishmen to be particular, they started setting up their factories in Kasim Bazar, जो कि कोलकाता का सबसे बड़ा बाजार था उस समय पर. Hi Namita, good evening, welcome to this session. Correct. नहीं, बक्सर के बाद नहीं हुआ था, प्लासी के बाद. Why did बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? मैं वही बता रहा हूँ राजेंद्र. ओके, कि कासिम बाजार का जो सबसे बड़ा बाजार था कोलकाता का, द ब्रिटिशर स्टार्टेड फोर्टिफाइंग इट. उसको फोर्टिफाई करना उन्होंने शुरू कर दिया था.
Now, why Sirajuddaulah was against fortification of the Qasim Bazar? There's only one major reason for that. Okay, उसके लिए एक ही major reason है. You have to ask the question, why does a section or why does a military regiment starts fortification? Okay, fortification क्यों शुरू करता है कोई भी एक military unit? Because to strengthen, ओके, बिकॉज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द बेस, ओके, बेस को स्ट्रेंथ करने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है. मतलब क्या, यू आर स्टार्टिंग टू प्लान अ कू, ओके, एक कू आप प्लान कर रहे हो विच अल्टीमेटली विल गो इनटू द नेगेटिव एस्पेक्ट. तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश इंग्लिशमैन को सीधे सीधे मना कर दिया टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन ऑफ कासिम बाजार, और परमिशन भी निकाल दिया टू ट्रेड. Now this created a rift. Okay, this created a rift between the Englishman and the Sirajuddaulah. Englishman को चाहिए था, okay, Englishman को चाहिए था कि they will install a puppet नवाब. ओके, पपेट नवाब को वो इंस्टॉल करना चाहते थे, जो उनका ही बात सुने, उनका ही सब कुछ उनके इंस्ट्रक्शंस पर वो काम करे. एंड उसी इसमें मीर जाफर, okay, Mir Jafar, who was the commander for Sirajuddaulah, betrayed Sirajuddaulah in the Battle of Plassey, which took place on 23rd of June 1757. Okay, 1757 में Battle of Plassey हुआ था, which was fought between Sirajuddaulah, who was the last independent, okay, who was the last independent Nawab of Bengal, and Robert Clive. Okay, Robert Clive is a very important figure अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं गाइस, क्योंकि थर्ड ट्रीटी ऑफ थर्ड बैटल जो हुआ था एंग्लो फ्रेंच वॉर में, इवन दो, ओके, सेकंड नॉट फर्स्ट, सेकंड बैटल जो हुआ था, कार्नेटिक वॉर हुआ था बिटवीन द एंग्लो एंड द फ्रेंच, इवन दो, ओके, इवन दो डुप्लीएक्स had aligned himself with मुजावर जंग, ओके, और चंदा साहिब के साथ भले ही उसने दोस्ती कर ली थी, इवन दो, इवन आफ्टर दिस रॉबर्ट क्लाइव इमर्ज्ड एज विक्टोरियस इन द एंग्लो फ्रेंच वॉर, और फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुआ था इसमें. सो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑन द इंग्लिश साइड, which actually turned the pages in the battle of Plassey. अब बैटल ऑफ प्लासी, once सिराजुद्दौला lost बैटल ऑफ प्लासी, क्या हुआ, सारे जो दीवानी और निजामी राइट्स थे वो इंग्लिशमैन के पास चले गए. सो दे हैड, अल्टीमेटली दे हैड ऑल द पावर टू टू स्टार्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव रीन इन बंगाल एंड स्प्रेड इट इन रेस्ट ऑफ द कंट्री. फिर एक अटेम्प्ट हुआ, देयर वाज एन अटेम्प्ट. आई विजिटेड ऑल दोज हिस्टोरिकल प्लेसेस. लकी यू सैंतिका, इट्स बहुत बहुत ही हिस्टोरिकल वे है ये. ओके, सो लास्ट वन अगर हम लोग देखें, द लास्ट ब्लो which ultimately gave all the powers to the Britishers was the Battle of Buxar. Okay, Battle of Buxar था 22nd October 1764, which was fought between Mir Qasim and English forces, which were commanded by Major Munro. Okay, Mir Qasim and Suja Uddaulah. Okay, Mir Qasim and Suja Uddaulah. This was the last attempt to take the throne back, but ultimately the Englishmen rised victorious in this battle also. Now, एक चीज याद रखना guys, भले ही तुम लोगों को डेट याद नहीं है, इवन इफ यू डोंट नो द डेट कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था या फिर बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, प्लीज रिमेम्बर द ईयर. ओके, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने का. Okay, so Battle of Plassey took place in 1757 and Battle of Buxar took place in 1764. Okay, ये चीज याद रखना. Alright, 1764 Buxar and 1757 was Battle of Plassey. अब यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? Now what happened? Okay, what happened after this thing? Have you guys understood till here? Everybody has understood till here? सब लोगों को यहाँ तक समझ आया? Okay,
ग्रेट। ओके, अब समझते हैं व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। बट बिफोर दैट गाइस, व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764? क्या हुआ था? इंडिया का सबसे फॉर्मल अटेम्प्ट किया था ब्रिटिशर्स ने अंडर द regulating act, okay, under the regulating act of 1773, जिसमें okay, जिसमें the governor of Bengal, okay, जिसमें the governor of Bengal was designated as governor general of Bengal, okay, governor general of Bengal. And who was the first governor general of Bengal, guys? बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इमीडिएट केस सिपॉय म्यूटिनी बाय मंगल पांडे ऑन 6 मई 1857। 6 में नहीं, 10 में। और मंगल पांडे का इंसिडेंट उससे पहले हुआ है। लॉर्ड, कम ऑन गाइस, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑल्सो गाइस, वी आर हैविंग 9 PM सेशन टुडे। ओके, आज 9 बजे का सेशन हम लोग कर रहे हैं, दैट इज डेली जीके अपडेट। Okay, we are doing the daily GK update tomorrow and we have marathon tomorrow. कल मैराथन है। ओके, हम लोग कल मैराथन करने वाले हैं 2 to 5 PM, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। अवार्ड्स, डेज एंड बिजनेस अवेयरनेस, ओके, ये कर रहे हैं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। Lord Warren Hastings. Also, what had happened in 1774? 1774 में क्या हुआ था guys? What happened in 1774? Come on guys, what happened in 1774? India's first apex court. First apex court कहाँ पर establish हुआ था? Where was it established? Correct. Fort Williams. Okay, Fort Williams, कोलकाता। Who was the first judge? सबसे पहले जज कौन थे? Who was the first judge? Justice Impe. Very good, Sukanshika. Good to have you back in this class, Sukanshika. Justice Impe was the first judge. Okay, this is what had happened after the Battle of Buxar. एक पहला formal attempt किया गया था to establish a administrative reign by the Englishmen in India. Okay, now अब समझते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग समझते हैं। नाउ लाइक आई सेड गाइस, ओके, लाइक आई सेड कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इट वाज नॉट अ वन शॉट, ओके, या फिर वन शॉट एक्टिविटी नहीं था, एक दिन में रिवोल्ट नहीं हुआ था। इट टुक years, okay, years of accumulation of dissent from the from the people of India. Okay, तो उसके वजह से there are certain number of regions, okay, there are certain number of reasons why it led down to the revolt of 1857 in India. जैसे economic causes है, okay, there are economic causes in economic causes, political causes, administrative causes, socio religious causes एंड डिसेंट अमोंग सेपॉइस। ओके, ऐसे अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन व्हाट आर दीज रीजंस। ओके, इस रीजंस को डिटेल में समझते हैं हम लोग। नाउ सबसे पहला, ओके, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेस। ओके, सबसे पहला जो है वो इकोनॉमिक कॉजेस है।
नाउ इकोनॉमिक मतलब क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमिक? जब भी हम इकोनॉमिक कहते हैं गाइस, ओके, जब भी हम इकोनॉमिक कहते हैं, इट मींस समवेयर रिलेटेड टू मनी। ओके, वो मनी के रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं it has hurted the sentiments of people in India, where uh, where they have incurred huge amount of losses and they were not able to cope up with the money aspect. तो ऐसे reasons क्या है? What are the reasons behind it? Okay, समझते हैं हम लोग इस चीज को. Now heavy taxation, heavy taxation अंडर द न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट्स. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग रेवेन्यू सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था. रॉयतवारी सिस्टम है, महलवारी सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है. एंड टैक्सेशन, ओके, टैक्सेशन इज वन वे दैट द ब्रिटिश नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड. no matter what it is, no matter how bad the situation of Indian people is, or no matter how bad the economic situation of India is, उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज, कभी भी टैक्सेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. वाई? बिकॉज, ओके, यस, वाई? बिकॉज टैक्सेशन इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट के लिए वो बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू का. तो भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भी कर रहा हो, they did not compromise on the taxation because they wanted to extract a lot of money from the Indian excuse me guys, okay, from the Indian front. They wanted to abstract a lot of money, इसीलिए टैक्सेशन के ऊपर कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. सो दिस इज वन रीजन, ओके, दिस इज वन रीजन व्हाई द इंडियन पीपल वर डिसकंटेंट, व्हाई दे वर अनहैप्पी, और व्हाई दे वर डिसअपॉइंटेड विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ उसी के वजह से, ओके, बिकॉज ऑफ दिस सोल रीजन, बिकॉज ऑफ दिस सोल रीजन, that was heavy taxation, money lenders and traders, okay, money lenders and traders emerged as a new exploitative class. okay, नया exploitative class. अब जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिशर जो है वो उन्होंने कभी भी टैक्सेशन के ऊपर ब्रिटिशर जो है कभी भी उन्होंने टैक्सेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. मतलब क्या? द पीजेंट्स, okay, the peasants and the farmers, they were not exempted from the taxation, even though no matter it is bad climate, okay, bad climate है, बारिश नहीं हुई है, फसल ठीक से हार्वेस्ट नहीं हुई है, तो थोड़ा बहुत आज अगर हम लोग देखते हैं, आवर गवर्नमेंट गिव्स अ लिटिल बिट सब्सिडी और गिव्स कंसेशन इन द टैक्सेशन टू द फार्मर्स. हाउएवर द ब्रिटिशर्स डिड नॉट डू दैट. मतलब टैक्स भरना तो कंपलसरी था. उसके वजह से क्या हुआ? मनी लेंडर्स, ओके, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जो है एक नया एक्सप्लॉइटेटिव क्लास बनकर सामने आया. मतलब क्या? मनी लेंडर्स मतलब वी ऑल नो, उनका वो पैसे क्या करते हैं, वो पैसे ब्याज पर देते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं. सो इफ द पर्सन इज नॉट एबल, ओके, इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट, द लैंड इज कॉन्फिस्केटेड. ओके, उनका जो लैंड है उसको वो कॉन्फिस्केट कर लेते थे, या फिर दैट रिजल्टेड इनटू बॉन्डेड लेबर. ओके, दैट रिजल्टेड इनटू बॉन्डेड लेबर. ओके, बॉन्डेड लेबर में वो रिजल्ट करता था, या फिर द लैंड विच द फार्मर्स हैड उनको वो कॉन्फिस्केट कर लेते थे. फिर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, ओके, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट. 18 सेंचुरी में हम सब लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. मशीन मेड गुड्स वर ब्रॉट इन ह्यूज नंबर इन इंडिया. तो इंडियन के जो प्रोडक्ट थे और ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट थे उनको अलग अलग टैरिफ्स लगाए गए थे, सो दैट द ब्रिटिश गुड्स विल मूव फास्टर इनटू द मार्केट. इंडियन मार्केट इज अ वेरी बिग मार्केट, तो इन इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए गए, सो दैट द परचेस और द सेल गोज डाउन. ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश गुड्स वेर मूव्ड फास्टर इन द मार्केट. सो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी था. दिस ऑल्सो एडेड टू द डिसकंटेंट ऑफ द पीपल. फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. वी ऑल नो India, right from in ancient days, is very has always had a prosperous handicraft industry. चाहे वो blankets हो, टेक्सटाइल हो, या फिर ज्वेलरीज हो, या फिर पॉटरीज हो, या फिर पेंटिंग्स हो, इंडिया has had a great handicraft industry.
तो जो मेन सोर्स था, ओके, जो मेन सोर्स था ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, आज भी हम लोग अगर देखते हैं, इंडियन पीपल आर आर इक्विप्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स, ओके, अलग अलग स्किल्स सेट के लोग हमारे इंडिया में आज भी देखे जाते हैं। कोई ज्वेलर है, कोई कॉबलर है, कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई कुम्हार है। सो ऐसे अर्धनवेयर वाले लोग हैं। वी हैव सीन दिस स्किल सेट existing in the Indian roots from a very long time, और ये रूट कॉज था, सोर्स ऑफ इनकम था। तो उसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जानबूझकर टारगेट करके उसे डिस्ट्रक्ट कर दिया, and this also added to the agony of the Indian people. Eviction, and last one is eviction of lands from जमींदार से एंड तालुकदार, ओके, जमींदार से और तालुकदार से क्या करते थे, लैंड को वो इविक्ट कर देते थे। सिंस फोर्सफुल एग्रीकल्चर किया जाता था इंडिगो का और ओपीएम का, दे यूज्ड टू इविक्ट द लैंड एंड वहां पर वो लोग एग्रीकल्चर शुरू करते थे। तो अगेन दिस एडेड to the economic cause which ultimately led to the revolt of 1857। याद आ गया? यहाँ के सम्मान के लिए वहां का लेबल लगा के बेचते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट। और यहाँ से रॉ मटेरियल लो प्राइस में लेकर फिनिश्ड गुड्स बाहर से बनवा के इंडिया में हेवी प्राइसेस में सेल करना, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। ओके, सो दीज आर इकोनॉमिक कॉजेस गाइस, ओके, ये इकोनॉमिक कॉजेस है। अब समझते हैं पॉलिटिकल कॉजेस, ओके। इफेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी एंड सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। इफेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी मतलब क्या? अल्टीमेटली टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम द किंग्स, ओके, किंग्स से कंट्रोल लेते थे, प्रिंसली स्टेट्स का कंट्रोल लेते थे और सारा एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद ही कर देते थे। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, ओके, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी में दे यूज टू कीप द किंग्स ऑन पेंशन्स, ओके, किंग्स को वो लोग पेंशन में पेंशन देकर एडमिनिस्ट्रेटिव को कैरी आउट करते थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉज दैट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 is the doctrine of lapse, okay, doctrine of lapse which was introduced by whom guys? कल ही बताया था मैंने, doctrine of lapse किसने इंट्रोड्यूस किया था? वेरी गुड राजिंदर, ओके, वेरी गुड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहाउजी, ओके, लॉर्ड डलहाउजी, करेक्ट आंसर। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स गाइस? ओके, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? इट इज पर्टिकुलरली नॉन रिकग्निशन, ओके, नॉन रिकग्निशन of non-recognition of adopted hires, okay, non-recognition of adopted hires। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लिश गवर्नमेंट, इंग्लिश पीपल ने ये सीधे सीधे कह दिया था कि जो भी लीगल हायर नहीं है, अ पर्सन हु इज नॉट अ लीगल हायर, हु इज अडॉप्टेड सन और क्वीन, द ब्रिटिश सुप्रीमेसी विल नॉट recognize him as the king or queen of that particular province, okay। so इसका बेस्ट एग्जांपल हम सब लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, that is रानी लक्ष्मीबाई, okay, Rani Lakshmibai is the best example to understand doctrine of lapse। Now her son was actually an adopted son, and uh, since the Englishman had said that they will not recognize adopted hire, they will be taking control over the provinces, and फिर Rani Lakshmibai, she led the revolt of 1857 from Jhansi, okay, and ultimately she sacrificed herself to protect her land of Jhansi from the Englishman, okay। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है गाइस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हाँ, बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ओके, मैक्सिमम चांसेस टू बी आस्क्ड, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो हमेशा याद रखना, लॉर्ड डलहाउजी, ओके, लॉर्ड डलहाउजी, विच इज नॉन रिकग्निशन ऑफ अडॉप्टेड हायर, ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। नाउ this is one of the problem which has been in India from a very long time, okay। आज भी अगर हम लोग देखते हैं, one of the major problems that our country faces is corruption। अलग अलग लेवल पर अलग अलग लेवल का करप्शन
किया जाता है। तो द ब्रिटिशर्स वर एक्सट्रीमली करप्ट, ओके, एक्सट्रीमली करप्ट। हर एक चीज में दे यूज टू एक्सेप्ट ब्राइब्स, ओके, तो वो ब्राइब्स को लेते थे, या फिर दे ऑलवेज वांटेड गिफ्ट्स और वेरियस काइंड्स ऑफ फेवर्स, ओके। गिफ्ट्स एंड फेवर्स के बिना वो बिल्कुल काम ही नहीं करते थे। सो दिस बिकम वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। छोटी छोटी चीजों के लिए भी ब्रिटिश ऑफिसर्स, वी हैड दे हैड टू ग्रीस द palms ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्राइब और छोटा मोटा ब्राइब भी नहीं लेते थे वो, ओके, दे डिड नॉट टेक स्मॉलर ब्राइब्स, दे ऑलवेज took bigger bribes. So that acted as an exploitation to the people of India. Okay, लोगों का उसमें शोषण होने लग गया, exploitation होने लग गया, which again is added to the agony of the Indian people. Okay, यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को? Everybody understood till here? फिर okay, guys, for your last push for your CAT 2021 preparation, Unacademy has launched all new 2 month subscription just for you guys. It's a limited period offer. Please go for the subscription. It is your best chance to have access to all the amazing plus classes on the Unacademy platform. So jaldi se jaldi apna subscription le lo. Use the code RUSHI RUSHI and you will get an additional 10% discount on all your subscriptions. सारे subscriptions पर आपको 10% discount मिल सकता है. You just use my code RUSHI RUSHI. सर देखा जाए अब तो भी ऐसा हो रहा है, हमारे अपने लोग ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। Now again, this was also one of the most important socio-religious causes that resulted into the revolt of 1857. सबसे पहला activity is Christian missionaries. Okay, activities of the Christian missionaries. When Saint Xavier's for the very first time came to India under the Portuguese reign, the Indians got more exposure to Christianity as a religion. बट उस समय के जो एक्टिविटीज थे ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, दैट इज फोर्सफुल कन्वर्जन, ओके, फोर्सफुल कन्वर्जन हो या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फोर्सफुल कन्वर्जन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, उसके वजह से लोग ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, उसके वजह से लोग काफी परेशान हो गए थे। दे थॉट दैट द क्रिश्चियन मिशनरीज or are trying to interfere with our religion. So they were not happy with that. This again, attempts of socio-religious reforms like abolition of sati. Abolition of sati किसने किया था? Abolition of sati is a collective work of which two people, guys? Abolition of sati was done by which two collective efforts of which two people? Ishwar Chandra. Very good, AK. Rajaram Mohan Roy and Rajaram Mohan Roy and ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है। हजार बार बोला है मैंने नमिता, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। विलियम बेंटिक, यस, विलियम बेंटिक। इन दोनों ने मिलकर अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट, अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1828। विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। नमस्ते सर, आपके चरणों में मेरा स्पर्श। हाय दिनेश, वेलकम टू दिस सेशन। ओके, so attempt of socio religious reforms like abolition of sati, which was done by Rajaram Mohan Roy and William Bentinck, who was the governor general of Bengal at that particular time. Support to the widow remarriages and women's education. Widow remarriages and women's education is done by Ishwar Chandra Vidyasagar. Okay.
हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो. यस, सपोर्ट ऑफ विडो रिमैरेजेस एंड वुमेन्स एजुकेशन इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. Even this, okay, even these things were also seen as interference in social religious domains. Okay, social religious domain. Namita, not expected, Namita. And lastly, the government's decision to tax the mosque and temple lands also was one of the reasons for social religious causes that added up to the revolt of 1857. Okay, so these are social religious causes. Now, let us understand what is discontent among sepoys. Okay, sepoys के बीच में discontent क्या है? द अनहैप्पीनेस ऑफ द सिपॉय. सो ऐसा नहीं है कि सिपॉय का जो डिसकंटेंट था वो 1857 में ही हुआ. ओके, नो, उनका डिसकंटेंट या फिर उसका डिसअपॉइंटमेंट बहुत पहले से था. इट केम फ्रॉम 1824. ओके, 1824 से उनका डिसकंटेंट आया when the 47th regiment at Barakpur was ordered to go to Burma, which is today's Myanmar. Okay, जो आज का म्यांमार है. Now we all know, as Indians, we are so attached to our roots. हम लोग इतने हमारे roots को attached है कि we don't generally move from one places to another place. हमारा native place छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं. तो of course in that period people who worked as sepoys in the English army, of course उनको बुरा ही लगा होगा. They must have felt disappointed in the English administration. So ऐसा नहीं है कि 1856 या 1857 में ही they were disappointed. The disappointment came from 1824. Also there was restriction on wearing caste and secretariat mark. A lot of people among us, we have a habit to wear black thread or red thread at our hand, हमारे गले में, कमर में, कुछ लोग पैर में भी पहनते हैं. So that was not allowed. Okay, that was not allowed to the sepoys. So they were not happy with that. Secret rumors. Okay, secret rumors of proselytizing activities of chaplains. Okay, chaplains मतलब होता है office clerks. ओके, ऑफिस क्लर्क्स. और तुम लोगों को तो पता है ही है, यू गो टू, जिसको हम लोग प्यार से बाबू कहते हैं, उनके एक्टिविटीज तो हम सब लोगों को पता है ही. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, ऑफ कोर्स सम ऑफ देम. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हिंडरेंस इज दिस इज वन ऑफ द हिंडरेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस. ओके, so and lastly, the Indian sepoys were not happy with his emolution also. Emolution का मतलब है salary. So they were not happy with the amount of salary that was also given to the sepoys, Indian sepoys. Okay, got it? So this is about the discontent of sepoys. Okay, ये sepoys का discontent है. Got it? Now let us understand how did the revolt actually spread. Okay, revolt spread क्यों हुआ? We all know what was the triggering point. Okay, revolt को spread होने के लिए triggering point क्या था? It was obviously the reports of mixing up of bone dust in the floor. The जो नए introduced Enfield rifle थे, उसका जो cartridge था, उसको दांत से तोड़कर राइफल में भरकर पंप करके शूट करना पड़ता था. एंड द कार्ट्रिज विच वाज यूज्ड, ओके, उसका जो लिड था, उसका जो ओपनिंग था, दैट वाज मेड विथ व्हाट? दैट वाज मेड विथ द फैट ऑफ काउ एंड पिग. नाउ हम सब लोगों को पता है कि काउ इज एक्चुअली अ सेक्रेड एनिमल फॉर द हिंदूज एंड मुस्लिम लोगों के लिए पोर्क इज हराम. तो ऑफ कोर्स दोनों भी रिलीजन के जो सेंटिमेंट्स थे इस चीज को लेकर वो हर्ट हो गए थे. पहले वो रूमर्स थे बट लेटर ऑन दोज वर प्रूव्ड. सो इसके प्रोटेस्ट में, ओके, इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस, द 19th native infantry at Behrampur refused to use the Enfield rifles and broke out a mutiny in February 1857 and got disbanded in March 1857. A young sepoy of the 34th native infantry, इस चीज को याद रखना गाइस. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. 34th native infantry मंगल पांडे. ओके, 34th native infantry मंगल पांडे
कभी कभी पूछा जाता है कि मंगल पांडे जी का इन्फेंट्री का नंबर क्या है, फ्रॉम विच रेजिमेंट ही बिलोंग और विच इन्फेंट्री ही बिलोंग टू, तो ये याद रखना। ओके, 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे fired at the sergeant major of his unit at Barakpur. He was executed and his regimented was disbanded. फिर उसके बाद में the third native cavalry at Meerut refused to accept the greased cartridges. Thus, 85 of them were dismissed and sentenced to imprisonment. This sparked off a general mutiny and the revolt began on 10th May. Okay, 10th May 1857 को रिवोल्ट शुरू हुआ और फिर उधर से अवध, रोहिलखंड, द दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया और लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर वो स्प्रेड हुआ एंड दैट शुक ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी। ओके, वो ब्रिटिश अथॉरिटी को उन्होंने शुक ऑफ कर दिया, तो जनरल म्यूटिनी ब्रोक आउट। हाय ऋषिका, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस क्लास। So these are some of the leaders, guys. Okay, these are some of the leaders of the centers of the revolt. Okay, याद करने हैं मतलब याद करने हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, मीन्स रिमेंबर दिस, इसको छुट्टी नहीं है, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस। दिल्ली जनरल भक्त खान, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर, बिहार इज कुंवर सिंह, फैजाबाद इज मौलवी अहमदुल्ला, he declared, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने declared jihad against the British and the revolt started there. And Jhansi is Rani, Jhansi की रानी, that is Rani Lakshmi Bai. Okay, Rani Lakshmi Bai was the one, okay, जिन्होंने झांसी से लीड किया। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन गाइस, आज की क्लास का आखिरी पॉइंट इज कॉजेस ऑफ फेलियर। ओके, व्हाट वर द वेरियस कॉजेस ऑफ फेलियर। ओके, फेलियर के कॉजेस क्या थे। सबसे पहला, लिमिटेड एंड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस। ओके, बहुत ही लिमिटेड बेस था, जिस हिसाब से उस रिवोल्ट को स्प्रेड होना चाहिए था उस हिसाब से वो स्प्रेड नहीं हुआ, सो अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट ज्वाइन इन, सो लिमिटेड एक्सेस था, लिमिटेड एक्सटेंट था इस पर्टिकुलर चीज का, which did not spread much. Crucial support of certain sections of Indian public to the British authorities. कुछ इंडियन लोग ही थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इंफॉर्मेशन दे दी थी, सो critical piece of information already had with already was there with the Britishers, so this also resulted in failure of the entire revolt. तो एक्शन लेने से पहले, कोई एक बड़ा कदम लेने से पहले ही ब्रिटिशर्स ने छोटे छोटे पॉकेट्स में ऑलरेडी जो रिवोल्ट चल रहा था उसको सबसाइड कर दिया था। एंड देन लैक ऑफ रिसोर्सेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ब्रिटिश। ओके, लैक ऑफ रिसोर्सेस, जो ब्रिटिश के पास बहुत सारे गन्स, हथियार, रेजिमेंट्स थे, उतना इंडियंस के पास नहीं था। ऑलरेडी दे हैड लिमिटेड एक्सेस, ओके, लिमिटेड एंड लिमिटेड और सोशल बेस था, तो रिसोर्सेज पहले से ही कम थे। एंड लैक ऑफ कोहेरेंट आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। मेनली दिस रिवोल्ट इज नॉट अ नेशनलिस्ट रिवोल्ट, सारे सिर्फ अपनी टेरिटरी के लिए ही लड़ रहे थे, लाइक रानी लक्ष्मीबाई फॉर झांसी एंड कुंवर सिंह फॉर बिहार fraternity in the Indian context. Correct. So that is what, Rajinder, there was a lack of coherent ideology and political perspective. So we did not have a strong leader at that particular time. Okay, कोई एक ऐसा strong leader नहीं थे जिसने पूरे revolt of 1857 को handle किया होगा। Okay, they did not do it in that context. जनरल भक्त खान, ओके, जनरल भक्त खान भी जब दिल्ली पहुंचे, उस समय के लास्ट मुगल रूलर was Bahadur Shah Zafar. Okay, Bahadur Shah Zafar was the last Mughal ruler. Okay, he was the last Mughal ruler, Bahadur Shah Zafar. He was old, he was weak, so that did not
किसी भी एक मूवमेंट को आगे बढ़ने के लिए यू नीड अ स्ट्रांग लीडर ना, ताकि जो मूवमेंट में लोग हैं, ऑलरेडी जो मूवमेंट में लोग हैं, उनका मॉरल बना रहे, देयर मॉरल शुड बी अपलिफ्टेड एट ऑल पॉइंट ऑफ द मूवमेंट। तो हमारे पास वो स्ट्रांग लीडर ही नहीं था, वी डिड नॉट हैव द स्ट्रांग लीडर हु कुड टेक अ स्टैंड एंड लीड द रिवोल्ट फ्रॉम अप फ्रंट। ओके, ये यहाँ पर चीज हो गया। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। Got it, everybody? Chalo, let's have a look on the questions. Varun, you can get the PDF from my Google Drive. Okay, chalo. Guys, this is really important. Okay, I want all of you to enroll for all these mocks. अगर कैट 2021 के लिए सीरियस एस्पिरेंट हो आप लोग, तो यू नीड टू एनरोल फॉर दिस फ्री मॉक टेस्ट बाय अनअकैडमी। सबसे पहला जो होने वाला है वो 17 अक्टूबर को होगा, सेकेंड जो होगा वो 24 अक्टूबर को होगा, थर्ड जो होगा वो 31 अक्टूबर को होगा, एंड लास्ट वन जो होगा वो 7 अक्टूबर को होगा। सो इफ यू आर गिविंग कैट 2021, you should right now enroll for this test. This is the link. Okay, ये link है unacademy.com scholarships AMTCAT. You can use my referral code RUSHI रुशि, इस कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। The test is absolutely free guys, but you need an invite code. आपको एक invite code की जरूरत होती है, and my educator code is your invite code to enroll. तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे टेस्ट को आज ही के आज एनरोल कर दो गाइस। ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया? Who among the following was the first one to come to India? गोवा से नहीं आए थे, कैलिकट से आए थे। D, 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 D. Everybody said it's D, and that's a correct answer. Portuguese. Next. Who among the following discovered the Cape route from Europe to India? Who among the following discovered the Cape route from Europe to India? Who among the following discovered the Cape route from Europe to India? The correct answer is Vasco da Gama. Vasco da Gama is the correct answer. Next, the English East India Company was formed by a group of merchants known as the English East India Company was formed by a group of merchants known as the Dash in 1600 AD. The English East India Company was formed by a group of merchants known as the Dash in 1600 AD. Namita, Sukanshika, Shreya, Rajinder, Pankhuri, Varun, Sayantika, Shashi all gave correct answer. English merchant is the correct answer. Guys, कल आखिरी टॉपिक है। टुमारो वी आर डूइंग लास्ट टॉपिक इन इंडियन हिस्ट्री। परसों दिन एक फुल क्विज करेंगे हम लोग 40-45 क्वेश्चंस का इंडियन हिस्ट्री का, एंड वी विल कंक्लूड विद इंडियन हिस्ट्री। कल आखिरी टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस. राइट फ्रॉम इमरजेंस ऑफ गांधी टिल इंडिपेंडेंट इंडिया हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं. तो प्लीज कल का सेशन मिस मत करना. In which place the first factory of English East India Company was built? In which place the first factory of English East India Company was built? Also, we have Dynamic GK Marathon tomorrow. कल और परसों डायनामिक जीके का मैराथन है हमारा. The correct answer is Surat. Surat is the correct answer. Next, who among the following Europeans were forced to sell all their settlements in India to the British? Who among the following Europeans were forced to sell all their settlements in India to the British? Rajinder, Pankhuri, Namita, AKV ने कहा बी, सैंतिका ने कहा डी. The correct answer to this question is A guys. Dutch. French नहीं. Pondicherry was restored to French. Dutch after the Battle of Bedera सारे सेटलमेंट्स इंग्लिशमैन को बेच दिए थे उन लोगों ने. कहाँ है फोकस? वेयर इज द फोकस? सैंतिका, नमिता, पंकुरी, शुकांशिका, श्रेया. Who was the Governor General during the revolt of 1857? दहेज में बॉम्बे दिया था चार्ल्स सेकंड को. Who was the Governor General during the revolt of 1857? Who was the Governor General during the revolt of 1857? The correct answer to this question is A. Lord Canning. Next, who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? Who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? Who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? Correct. That is a correct. Begum Hazrat Mahal. Begum Hazrat Mahal is the correct answer. Next, which of the following is one of the social reasons for 1857? Which of the following is one of the social reasons for 1857? नमिता ए एंड बी ऑप्शन है ही नहीं. ए एंड बी ऑप्शन है ही नहीं इधर. ए एंड सी है. The correct answer is the racial arrogance of the British created a difference between the rulers and the ruled. Next,
Which of the following pair is not correctly matched? Which of the following pair is not correctly matched? Which of the following pair is not correctly matched? Correct. Correct answer is Delhi, Maulvi Ahmadullah. Maulvi Ahmadullah is not Delhi, it is Faridabad. Faridabad. Last question. Which of the following was the impact of 1857 revolt? Which of the following was the impact of 1857 revolt? Which of the following was the impact of 1857 revolt? Come on guys, आखिरी question. This is the last question. And the correct answer is all of the above. Doctrine of lapse was withdrawn in 1859, 1858. End of Mughal rule. Bahadur Shah Zafar was the last ruler. Control of administration was passed to the British Crown. Government of India Act. Government of India Act 1858. Okay, Government of India Act 1858. Okay, चलो, that is all from my side for today. मेरी तरफ से आज इतना ही. Any doubt in this session, guys? किसी को कुछ डाउट है इस सेशन में? ओके, कल आखिरी चैप्टर करेंगे. इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को कल पढ़ेंगे हम लोग. ओके, यस, 9 PM सेशन है. वी हैव 9 PM सेशन टुडे. चलो, so before we part ways, do have a look on the cat iconic one-on-one live mentorship program, guys. You can get all these benefits, like you can speak with the mentor directly, you can clear a doubt, you can discuss concept, you can discuss exam strategy, build a customized study plan, and book slot as per your convenience. Also, the offer has been extended to 13th of October, guys. You buy 3 months of subscription, you get 1 month subscription free. You buy 12 months of subscription, you get 3 months of subscription free. And you buy 24 months of subscription, you get 3 months of subscription absolutely free. Do not forget to use my educator code RUSHI to get an additional 10% discount on this as well as the iconic subscription that goes for 39,500 for 1 year, and CAT 2022 aspirants, this is the one you should be looking for, that goes for 59,999. Thank you all for joining me for this session. You guys have a good evening ahead. I will see you at 9 PM in my special class for the daily GK update class. Till then, you guys take care. Let's crack it. Bye bye, guys. Have a very good evening ahead.